Hello everyone. Today we'll start with the second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is basically an autobiography written by Nelson Mandela. As you know, the difference between biography and autobiography is biography is something that someone else writes about someone, but autobiography is when a person writes about his own life. This book is also one of the autobiographies. That means Nelson Mandela has written it about his own life and his life experiences. You must be aware that Nelson Mandela was the former president of South Africa, and you must also have studied in your classes about Nelson Mandela and his struggle to achieve freedom for his country, South Africa. In class 9th SS, you must have studied about apartheid and the struggle that the blacks faced during the white regime. This chapter highlights the same struggle and the problems that Nelson Mandela faced while he was walking on the path of justice. There is no story kind of thing to be summarized here, so we'll directly start reading. Apartheid is a political system that separates people according to their race, and this system was specially unique to South Africa. Nelson Mandela and his African National Congress, they spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Nelson Mandela became the first black president of this nation. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Nelson Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. The inauguration here means the opening of a new beginning, the starting of a new beginning. That was the country that was now becoming independent, which was now free. Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. That means after 300 years. Centuries means we know 100 years. So it is 3 centuries. That means 300 years of whites rule. After that, Nelson Mandela became the first black president of South Africa. Mr. Mandela's African National Congress, that is also known as ANC, won 202 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history, which was actually historical. That means it was a great achievement. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Nelson Mandela said that this beautiful country, here this represents South Africa. While this inauguration ceremony was taking place, that means when the country was being declared independent, at that time Nelson Mandela said that the country will never face oppression again by no one else. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed with the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. There were happy scenes, merry scenes being looked at. Here each one, that means whether be a black person, a white person or a colored person, everyone was celebrating this event together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. This ceremony took place on 10th of May, and we are going to talk about the same day. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Here Nelson Mandela says that 10th May dawned bright and clear, means it was seen bright and clear. उस दिन क्या होगा, कैसा होगा, वो सब कुछ बहुत क्लियर था नेल्सन मंडेला को. और 10th मई के पहले कुछ दिन तक वो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े डिग्निटरी से घेरे हुए थे. मतलब उनको बहुत सारे लोग मिलने भी आते थे और ये भी काफ़ी सारे लोगों से जाके मिल रहे थे. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. This
इज़ दी एम्फोसिस शोन कि वो इवेंट कितना बड़ा था, कि ऐसा कहा गया है कि इससे बड़ा इवेंट, इससे बड़ी गैदरिंग कभी वापस नहीं हो सकेगी साउथ अफ्रीका में। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. The event took place at the place called Pretoria. यहाँ पे एम्फीथिएटर फॉर्म किया गया था. इट इज़ अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, मतलब कि एक ओपन एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं. आप लोगों को अगर ध्यान हो तो बहुत सारे ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर्स इस टाइप के बने हुए होते हैं. सर्कुलर शेप में होता है जहाँ पे सिटिंग अवेलेबल होता है एंड इन द सेंटर इट इज़ एन ओपन स्पेस. सो सच काइंड ऑफ प्लेस वॉज फॉर्म्ड जहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया था, उस जगह के आसपास ऐसी जगह पे बनाई गई थी. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये जगह बहुत पहले से यूज़ की जा रही थी, पर ये जगह यूज़ कौन करते थे? The whites. It belonged to them. They used this for their political purposes, but now when the country was becoming independent, this was used for a better purpose. जहाँ पे कोई रेस के बेसिस पे या नॉन डेमोक्रेटिक यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा था ये जगह को. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़िनानी. 10 मई को पहली चीज़ तो ये कि वो सीज़न उस टाइम पे ऑटम था. सो ऑन दैट ऑटम डे ऑन 10 मई यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिसमें नेल्सन मंडेला को अकम्पनी, मतलब कि उनके साथ खड़ी थी उनकी डॉटर ज़िनानी. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट. यू पीपल मस्ट बी नोइंग, कभी शायद आप लोगों ने ये सेरेमनी देखी भी होगी टीवी पे. जब भी कोई इलेक्ट होता है उनको उनकी पोजीशन देनी होती है, तो हमारे कंट्री की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी कंडक्ट करवाते हैं. प्राइम मिनिस्टर को भी ओथ सेरेमनी प्रेसिडेंट करवाते हैं, पूरे कैबिनेट को भी वही करवाते हैं. तो यहाँ पे भी जब ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी तो पोडियम पे खड़े थे मिस्टर डी क्लर्क और ही वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. मतलब कि नेल्सन मंडेला के बाद में इनको डेप्यूटी प्रेसिडेंट की पोजीशन की गई थी. देन थाबो बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स अलॉट किए गए थे. फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे थाबो बेकी. M here is silent. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. That means, सबके सामने नेल्सन मंडेला ने जब ओथ ली तो उन्होंने कहा कि यहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबके सामने मैं ये प्रॉमिस करता हूँ और ये होप भी करता हूँ कि हम हमारी कंट्री, मतलब कि साउथ अफ्रीका को काफ़ी आगे लेके जाएंगे, प्रॉस्पर करवाएंगे और इसमें मुझसे जितना भी बनेगा वो मैं पूरा सपोर्ट करूँगा. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. He also hoped that after so long of oppression and suppression, वाइट्स ने 300 साल उन पे रूल किया था. तो मंडेला के अकॉर्डिंग हमने, मतलब कि साउथ अफ्रीकन्स ने अगर 300 साल तक ये चीज़ झेली थी तो अब कहीं ना कहीं ये चांस था कि ये एक अच्छी सोसाइटी बन के सामने आएगी, क्योंकि जो अप्रेस्ड हुए थे वो कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरे भी वो चीज़ें फेस करें. सो हमारी कंट्री एक बहुत अच्छी कंट्री बन के सामने आएगी जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करेगी, ना ही कि किसी रेस में. स्टूडेंट्स, I hope till this everything is clear. We'll be continuing further in the next session. Thank you.